झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 ये इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री का पेपर सबमिशन करेंगे और मैंने बायो का पहले ही अपलोड कर दिया है, सो आप लोग जाके आंसर को चेक कर लीजिए। फिर चलो हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स को मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगी। ये सेट सी है, जो जिसके पास सेट सी पेपर है वो अपना अच्छे से मैच कर लें। चलो फिर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि carbohydrates that yields 2 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis are option A monosaccharides, option B oligosaccharides, option C polysaccharides, option D disaccharides. So the correct answer will be option B oligosaccharides. Next question. The sprites having the aldehyde group and glucose does not give dash and it does not form the hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. Option A Fleming test, option B Streams test, option C Benedict test, option D is Tollin test. The correct answer is option B. Next question. Dash is insoluble in water and constitute about 80-85% of starch. Option A cellulose, option B amylopectin, option C amylose, option D is glycogen. So the correct answer will be option D glycogen. Next question. Except all other natural occurring alpha amino acid are optically active since the alpha carbon atom is asymmetry. Option A serine, option B alanine, option C lysine, option D is glycine. So the correct answer will be option D glycine. Next question. A polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 U is called a option A proteose, option B peptone, option C protein, option D is none of these. So the correct answer will be option C. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सो इसको हम लोग अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। 56 क्या बोल रहा है कि 100 watt bulb means 100 watts means what, that is P is given 100 watt equal to 100 joule per second. एक सेकेंड, 100 joule per second. एंड नेक्स्ट क्या बोला है, emitted monochromatic light of wavelength 400 nanometer and wavelength is given 400 nanometer. Calculate the number of protons emitted per second. हमें protons निकालना, number of protons emitted per second by the bulb. ओके, इसमें फॉर्मूला सबसे पहले हमें एनर्जी का निकालना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N इक्वल टू पी बाई ई। सो ई निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो इस फॉर्मूला में अगर पुट करोगे, H का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और C का वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁻8। डिवाइड करोगे लैम्डा से, जो लैम्डा कितना दिया है हम लोग का 400। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। सो क्या दिया था, H का वैल्यू में है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ 8 बाई लैम्डा इज़ 400 इंटू 10⁻⁻9। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हाँ, सो हम लोग का फॉर्मूला था N इक्वल टू पी बाई ई। पी दिया हम लोग को 100 और E का वैल्यू आया था 4.9
0.69 into 10 to the power minus 19. इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.012 into 10 to the power 20. सो कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So the next question is the principal quantum number determining the size and to a large extent the dash of the dash orbital. Option A shape, option B energy, option C orientation, option D is spin. So the correct answer will be option B. Next question. Total number of nodes are given by n minus 1, that is the sum of angular nodes, L angular nodes, and n minus 1, n माइनस यहाँ L होगा, ठीक है, n माइनस L माइनस 1 डैश नोड्स. क्या होगा? ऑप्शन ए एंगुलर, ऑप्शन बी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी एक्सियल, ऑप्शन डी इज रेडियल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेडियल. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्स मॉडल ऑफ द hydrogen atom not only ignores the dual behavior of electron but also contrasted principle. कौन सा प्रिंसिपल है? ऑप्शन ए पाउली एक्सक्लूशन, ऑप्शन बी हंसबर्ग अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी हाउबाउ छोड़ो क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी इज डी ब्रॉगली. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Next question, the comprise more than 78% of all known elements and appear on left side of the periodic table. Option A is non-metal, option B is metal, option C is metalloids, option D is noble gases. So the correct answer is option B. Next question, the branch of science that takes into account the dual behavior of matter is called. Option is statical mechanics, option B is wave mechanics, option C is classical mechanics, option D is quantum mechanics. The correct answer is option D, quantum mechanics. Next question, for a system such as an atom or a molecule whose energy does not change with time, the स्कैन ने क्या लिखा है ये स्क्रैंडियोडिनर इक्वेशन इज रिटन एज. इसमें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी ऑप्शन डी एक ही जैसा लिख दिया है. एक सेकंड लेट मी चेक. ओह सो ऑप्शन डी में जो है ऊपर में डैश होगा, ठीक है. So the correct answer is option C only. Next question है dash quantum number gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to the standard set of coordinates axis. So the correct answer is option A, azimuthal. Next question, dash is a water soluble components which constitutes about 50 to 20% of starch. So the correct answer will be option B, amylose. ठीक है. Next question, the coagulation of egg white on boiling is a common example of. So the correct answer will be denaturation. Next question, what is the special name given to bases that dissolve in water? Option है acid, salt, alkalides, neutral substance. So the correct answer will be option C, alkalides. Next question, which of the following is listed common as a common water soluble basis or alkali? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी इज कॉपर आयोडाइड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What happened to the color of dry blue litmus paper when exposed to dry HCl gases? HCl gas. Option A is it turns red immediately. It turns white. It doesn't change color. It turns green. So the answer will be option C. Next question, which of the following acids are mentioned weak acids? So the correct answer will be option C. Next question, which of the following are generally considered to be bases? ऑप्शन ए है all metals oxide and metal hydroxides. ऑप्शन बी is all non-metal oxide and non-metal hydroxide. ऑप्शन सी is only metal oxide. Option D is only metal hydroxide. The correct answer will be option A. Next question, and represents means and यहाँ पे डैश होगा, ठीक है. एंड डैश रिप्रेजेंट द simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Option A is molecular formula. Option B is structure formula. Option C is chemical equation. Option D is empirical formula. So the correct answer will be option D. Next question, calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. पहले हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं. सो द इक्वेशन विल बी क्या होगा, CH4 प्लस O2 gives you CO2 प्लस 2H, यहाँ पे 2 होगा. सो ये इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा 12 प्लस 4 इंटू 1 16 ग्राम और यहाँ है 16 ग्राम. सो 1 मोल ऑफ CH4 gives you 2 moles of H2O. Okay, so 1 mole of CH4 means methane. 1 mole of methane gives you 2 moles of H2O. So क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 into 18 gives you 36. So the correct answer will be 36 H2O. Next question will be the value of E by ME ratio. सो ई का वैल्यू क्या होता है 1.602 बाई 9.109 ऊपर हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -9, एक सेकेंड, -19 और नीचे में होगा -31. इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11. ये किस में है, ऑप्शन ए में है. हाँ, ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है. ऑप्शन बी में -11 है और हम लोग का आ रहा है सिर्फ 11, पॉजिटिव 11, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स in the gas phase do not show a continuous separates of wavelength from red to violet. Rather they emits light only at a specific wavelength with dark spaces between them. Such spectra are called option A line spectra, option B band spectra, option C continuous spectra, option D is none of the above. The correct answer will be option A. Next question, the element helium was discovered in the sun by dash method. So the correct answer will be option B. अभी हम लोग सिर्फ 75 तक ही रहने देते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हम लोग सोल्यूशन के साथ कर रहे हैं इसलिए. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.